Hello class, welcome back. Today I am going to explain you some practical problems on union and intersection. So before to start this topic, firstly we will discuss a few formulas, and the formulas are class, now see this figure. With this figure we just find out some few results, right? And there also maybe case of formulas, a result, whatever. So these firstly we must know how this result has formed with the help of Venn diagram. Okay class. So now you know about the Venn diagram. One time you have been studying this topic. So class, it is a rectangle. This rectangle represents a universal set, and there are the two sets which has some common part, right? This is A and B. Okay. So I am drawing a few things, a few region I am shading here with a different color. So this region is representing A minus B, this one, and the mid part and this part it is representing by B minus A, and the middle part it is intersection A union B. This portion is a union B, A intersection B. It is A intersection B. Okay class, so you also draw this figure. Class, now you see some few results. Class, if then A and B and if there is no any common part is there in A and B, then A and B are called a disjoint set, right? When there is no any common part between A and B. So class, I am drawing again this figure, and there are some common part. It is A intersection B. It is B minus A. It is A minus B. Now I am going to formulate all these formulas. First, the formula is A union B. And A union B, number of element in A union B, that will be equal to NA plus NB, right? But NA and NB, if you are adding NA and NB, set A and set B, so this region coming two times in this addition, because there is some common part between there. It is overlapping. It is A and it is B. One is overlapping. So there is a need to be subtracted one time, A intersection B. So I subtract NA intersection B. Now this complete side is equal to NA union B. This is the first result. Note down. Second is NA union B is also equal to, on adding all these three parts, then N A minus B, N B minus A, and N A intersection B, right? On adding these three parts, that is also equal to NA union B. Now the third part, class, you see, I shall draw this figure as in this way. It is also, your understanding, both figures are same. So you see that figure, class, if I find out the result of NA union B, so in the two way we can write this formula. One, the first way is that, you see class, it is NA, and from NA if you subtract this green part, NA is the set A is red and green, and if you subtract green part, then you will get only red part. The red part is equal to A minus B. So we can say here NA minus NA intersection B, it is equal to NA minus B. Now write the fourth result, NB minus A, it is equal to NB minus NA intersection B, right? From the green and black part, if you subtract green part, then you will get only black part. This black part is equal to B minus A. The fifth result is, again write NA minus B. It is also equal to, if you subtract if you subtract B, the set B from the whole figure,
then you will get the green part, right? It's a green and black part. If you subtract these all three part, then you will get only red part, and the red part is equal to NA minus B. So we can say here NA union B minus NB is equal to NA minus B. The sixth result, the B minus A, it is NA union B minus N is NA minus B. Class, these are the few results are there. I am explaining all these results as you do not learn all these are. You understand all these formulas, as you also should formulate all these results with this figure what and that I have been explaining, right? Class 1, another formula is there which is in between of three results, three set A union B union C, right? So there is another result I am writing here. Class, one thing more I am explaining you. The class, the first result, the first formula, this one, if you apply this formula for this result, when A and B are disjoint, so when A and B are disjoint, then A intersection B is equal to 5. And if we're taking NA and NA intersection B, then it is 0. Okay. So class, this result, this portion will be 0. And A intersection B. Then and A union B will be equal to NA plus NB. So I write it here. NA union B is equal to NA plus NB if A intersection B is 5. Okay, if there is no any common part. Okay class, these are the few results. Another result also I am writing here. Class, I am this result is not, figure is not very important. Now class, I see here another result I am writing. If we take three set A, B and C, A, B and C, and this is the common part, this figure representing A intersection B intersection C. Okay, so now I'm writing the formula, and A union B union C is equal to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus B intersection C and minus A intersection C plus A intersection B intersection C. Class, this is the result for A union B union C. It is a complete list of formula. You copy down, and now I'm going to explain the question. Class, question number 1. It's a very simple problem, class. It is nx. There are two set x and y. Nx 17 and y 23. And A union B is 38. We have to find A x intersection y. We have to find out. Just write the result here. X union y is equal to nx plus ny minus x A intersection B, and now put the value. It is 38, 17, 23 minus x A intersection y, right? It is 40, and n x intersection y is 40 minus 38. This is 2. So this is the result. Answer is 2. See the next figure, class. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both English and Hindi, right? So here, and Hindi, right? Number of people who speak Hindi. This is 250, and n of English, that is equal to 200, and we have to find English and Hindi. This is we have to find out, and total we have this is 400. The group of 400 people, so जो union होगा, that is equal to total. तो ये 400 आपका होगा. Applying the result, and H union Hindi, H union E is equal to NH plus NE minus NH intersection E. Put the results. It is 400 NH 250 plus 200 minus NH intersection E. And H intersection E is equal to, it is 450 minus 400, and that is equal to 50. This is the answer. So class, copy down all this question.
Class number take question number 6. In a group of 70 pupils, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks, right? Means 70 it is that is will be equal to A union B, right? जब आप यूनियन फाइंड करेंगे, यूनियन करेंगे तो यूनियन जो है वो टोटल के इक्वल है, right? क्योंकि इसमें मेंशन है at least one of the two, each person like at least one of the two, right? And how many like both tea and coffee? So class, it is N C for coffee, T for tea, and it is on union it is equal to 70. N C number of coffee person 37, number of tea is 52, and we have to find C intersection T. Coffee intersection T. Applying the formula and you will get the result. It is NC and T minus C intersection T. Put the values 70, 37, 52 minus and C intersection T. And C intersection T is equal 9 and 8 minus 70. It is 19, right? This is the final answer. 19 people who like both tea and coffee. Come on, question number 7. All class questions are all questions are same. There's a little bit change are there in this question, so I choose this question. In the group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, both, right? And how many like tennis only, not cricket? So firstly, we have to we should know what is the expression for this statement, like tennis only but not cricket. Okay, that is also I'll tell you. And how many like tennis? It is NT, right? So what the results are given for the, so I just writing here T for tennis, C for cricket. I am taking here. So it is a union, that will be equal to 65. It is union, that is equal to 65. And after this, for cricket, it is 40. And tennis, for both, it is equal to 10, right? So for these three things, first find out NT. How many people like tennis? So first I will find NT from these results. It is NC union T, NC plus NT minus NC intersection T. Store the value 65 is equal to 40, and it will be find out, and intersection is 10. So it is 30. 30 will come here. 65 minus 30 is equal to NT, and that is equal to 35, right? So 35 is equal to tennis. 35 people like tennis. And now the next part which is left here, it is I'm going to explain. This is how many people like tennis only but not cricket. Okay. So for this result, for the second result, I am writing here like tennis only but and not cricket, so what will be the result for this thing? That is equal to, we have to find N T intersection C complement, we have to find out. आपको ये फाइंड करना है T, उसमें टेनिस हो बट क्रिकेट नहीं होना चाहिए. सो T इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट आपको ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को. अब इसके लिए हमें क्लास वैल्यू देना पड़ेगा, और वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे कि जो क्रिकेट का रिजल्ट है, अगर आप अब हम अगर जाएं फॉर्म वेन डायग्राम पर आइए, तो आपको क्या फाइंड करना है. जैसे कि ये टेनिस है, तो आप प्लस ये टेनिस है, ये क्रिकेट, आपको ये फाइंड करना है. हमारे पास क्रिकेट की वैल्यू है, इवन हमारे पास होल की वैल्यू है, इंटरसेक्शन 65 है. अगर आप 65 में से, अगर आप इस होल में से 65 होल है, अगर आप क्रिकेट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, टेनिस आ जाएगा. तो 65 माइनस 40 दैट इज 25. ठीक है. तो हम लोगों को फाइंड करना है
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लास, और इसको लिख सकते हैं एन टी माइनस सी, ठीक है। ऐसे टी माइनस सी होगा ना, इट इज टी माइनस सी। आपको ये फाइंड करना है टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको फॉर्मुलेट कराए थे और मैंने अभी कॉन्सेप्ट लगा लिया। तो प्लस आप उस जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया उस कॉन्सेप्ट से आप करिए, कोई जरूरत नहीं है आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो यहाँ पर हमारे पास यूनियन है 65, टोटल हमारे पास 65, हमारे पास क्रिकेट है, आप दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा 25, ठीक है। तो दैट इज इक्वल एन सी यूनियन टी माइनस एन सी। तो 65 minus 40, it is 25. 25 is the answer, class. Question number 13 I am going to do. This is from miscellaneous exercise, and there are some changes are there. One, well, the things are given there. In a survey of 600 people, right? 150 people like tea, 225 like coffee, and 100 taking both tea and coffee. But we have to find how many are there who taking neither tea nor coffee, right class? Class actually आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा either and or neither nor। इसको आप सेट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आपने समझा एंड मींस इंटरसेक्शन और मींस यूनियन। इसमें दो वर्ड और होते हैं क्लास, एक होता है ओनली और एक है आपका नीदर एंड नॉर। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करें क्लास, उसको आप लर्न कर लीजिए। अब क्लास देखिए यहाँ पर दो सेट है, टी एंड कॉफी, आपको रिप्रेजेंट करना है नीदर एंड नॉर। तो नीदर एंड नॉर का मीनिंग ये होता है कि आपको चाहिए है टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है नीदर एंड नॉर, ठीक है। बस अंडरस्टैंड, नीदर एंड नॉर। जैसे अभी आपने जिस पहले मैंने कराया था आपको ओनली टेनिस, तो अगर आपको आ जाए ओनली टेनिस मतलब जो मैं लास्ट क्वेश्चन किया, मैं इसके बाद कर दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए ओनली टी, जो लोग ओनली सिर्फ टी लाइक करते हैं, कॉफी लाइक नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, टी इंटरसेक्शन कॉफी कॉम्प्लीमेंट, कॉफी को हटा देंगे, या इसको आप लिख सकते हैं एन टी माइनस सी। तो आपको ओनली टी का मतलब है टी को सी से माइनस करें। और अच्छा, अब ओनली कॉफी का क्या फॉर्मूला होगा, अब आप लोग बता लेंगे, कॉफी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट, राइट, मतलब कि सी माइनस टी। तो आपको एनी हाउ ये दोनों चीजें फाइंड आउट करना है, ठीक क्लास। तो अब मैं अपने क्वेश्चन पर आ जाऊं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए हमको अभी मैंने लिखा टी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ से किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा एन टी यूनियन सी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इट इज बाय डे मॉर्गन्स लॉ। मतलब आपको ये फाइंड करना है। अब आपको इसके लिए चाहिए टी यूनियन सी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एन यू माइनस एन टी इंटरसेक्शन टी यूनियन सी। तब आपको एन यू चाहिए, मतलब आपको चाहिए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, आपको चाहिए यूनियन के एलिमेंट, टी एंड सी के जब आप माइनस करेंगे तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। मींस वी हैव टू फाइंड, हमारा एम क्या है, हमको ये दो चीजें एनी हाउ फाइंड आउट करना है। प्लस इन द फिगर इन द क्वेश्चन, अब क्लास अगर आप इसको फिगर से करेंगे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, फिगर से भी और इजी है, यहाँ से भी इजी हो जाएगा। अब इसमें आप जैसे कि आपको एनयू दिया गया 600 पीपल इन अ ग्रुप ऑफ सर्वे किया गया 600 पीपल में, तो आपका एनयू आ गया 600, ठीक है। अब यहाँ पर कॉफी इट इज 225 एंड टी सॉरी कॉफी एंड टी का 150 है एंड इंटरसेक्शन इज 100। प्लस पहले हम फाइंड कर लें एंड सी यूनियन टी, सी यूनियन टी हम फाइंड आउट कर लें। फॉर्मूला हमें पता है, इट इज एन सी प्लस एन टी एंड सी इंटरसेक्शन टी। C is 25 coffee and T is 150 minus 100. We have forget 275 and 100, 375, 375 minus 100, 275, right? It is NC union T, ठीक है। बस ये आ गया। अच्छा, अब ये यूनियन आ गया। अब आपको फाइंड करना है नीदर टी नॉर कॉफी। तो
तो मींस आपको फाइंड करना है टी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। हम पूरा लाइन लिख रहे हैं फिर से, टी इट इज इक्वल टू यूनियन सी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इट इज NU माइनस NT यूनियन सी। ठीक है, तो ये क्लास आपका हो जाएगा NU is 600 and union is coming 275। ठीक है, अब रिजल्ट आ जाएगा 25 and 30 and 300 325 325 is the final answer class। इसको इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन class। This is a little long problem. The question is, in a survey of 50 people, it was found that 25 people read paper H, 26 read T, and 26 read I. 9 read both H and I, 11 H and T, 8 T and I, and 3 all the paper. We have to find how many people who read at least one of the paper. Means class हमको at least find करना है कि at least how many people are there who read all 3 paper. Means we have to find, देखिए क्लास अगर at least है तो कैसे आएगा, अगर आप इस फिगर को देखें, it is paper H, paper T and paper I, right? It is H, T and I. क्लास अब at least अगर कोई एक पर्सन होगा तो पेपर रीड कर रहा होगा तो ऑब्वियसली इस फिगर के अंदर ही लाई करेगा, या तो H लाई करेगा या तो H पे लाई करेगा या T में लाई करेगा या तो I में लाई करेगा, तभी तो आएगा ना एटलीस्ट। प्लस हमको एटलीस्ट में फाइंड करना है N H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। अब प्लस जो मैंने फॉर्मूला भी आपको मेंशन कराया था उस फॉर्मूले की हेल्प से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो क्लास पहले हम चीजें लिस्ट कर लें और आप सब चीजें अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, यहाँ पर मेंशन है, बट हम यहाँ पर फॉर्मूला के बाद चीजें लिस्ट कर लेंगे। It is NH plus NT NI minus NH intersection T minus H T intersection I minus NH intersection I, right? Plus NH intersection T intersection I. Yeah. Now class put all the values. NH who reads paper H, it is 25. And who read 20 reads 26 and I read 26 and it is mentioned here 9 read both H and I, so it is in the intersection, H intersection I is 9, so H and I is 9, तो क्लास H and I ये है, प्लस ये भी यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो बेटर यहाँ पर हम लिस्ट कर लेते हैं, आप कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो N H intersection T, H and T, how many are there? Say 11 are there, and H and I, it is 9, and T and I are 8. Okay, now class put the values, इन values को प्लेस कर लीजिए फॉर्मूले में। तो H and T आपका आ जाएगा -11, T and I is 8 and H and I is 9 plus intersection of all three, it is 3। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है प्लस 3। प्लस हम प्लस पूरे फिगर को इवैल्यूएट करेंगे, तो 25 25 50 26 76 76 and 3 79 79 minus this 11 minus 79 and 11 and 9 20 and 28 प्लस को माइनस करिए 1 and 5 51। This is the answer for H union T union I। क्लास ये फिगर आपको 26 होगा। ठीक है, यहाँ 52 आ जाए क्लास 52, ये फिनिश कर दीजिए क्लास। दिस इज द फर्स्ट आंसर। अभी क्लास में इसको हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसके बाद ही मैं करता हूँ, पहले इसको आप क्लास नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन। क्लास में आपसे क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ पीपल हु रीड
Class, in question number 2 we have to find number of people who read exactly one newspaper, right? So exactly one newspaper meaning is that we have to find, in question number 2 I am doing here, so it means only H, right, plus only T and plus only I, right? So firstly I am explaining you the first expression NH only, ठीक है? तो क्लास ये 3 का इंटरसेक्शन है, ए बी सी अब 3 सेट है, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? देखिए क्लास N ओनली H इज इक्वल टू NH, क्लास आप NH में से जो H के इंटरसेक्शंस हैं उनको आप माइनस करिए, मतलब कि HT और HI को, सो H इंटरसेक्शन T माइनस H इंटरसेक्शन I एंड प्लस N इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन है। पहले मैं क्लास में इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्लास देखिए, ये आपका सर्कल जो है ये H को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अब इसमें आपको फाइंड ये करना है ओनली H, ये रीजन है आपका, इट इज रीजन ऑफ ओनली H। फिर अब आप इस रीजन में से आपने क्या माइनस किया? अब इस रीजन में ये रीजन भी आ रहा है, ये पूरा रीजन, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ये कंप्लीट रीजन, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, और ये कॉमन पार्ट है जो तीनों का रीजन है, राइट? प्लस हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमने इसको माइनस किया, तो आपने H इंटरसेक्शन T को माइनस किया, देखिए मैंने माइनस किया H इंटरसेक्शन T। अच्छा, फिर इस रीजन को माइनस किया, H इंटरसेक्शन I को मैंने माइनस किया, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो ये पार्ट अब वैनिश हो गया, ये पार्ट 2 टाइम यहाँ पर ऐड हुआ था और यहाँ पर ये पार्ट वैनिश हो गया। अब मुझे एक बार वन टाइम क्या करना पड़ा, ये क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आपको लेकर आना है, तो आपने फिर इसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। इस कॉमन पार्ट को जब आप ऐड करेंगे तब आपको H ओनली का रीजन मिलेगा, क्योंकि ये क्लास 2 बार माइनस हो गया है, ठीक है? तो आपको वन टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्लास, ये आपको देगा H ओनली, ठीक? इन अ सेम वे वी विल फाइंड ओनली T एंड ओनली I। उसके बाद जब सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे इन एक्सप्रेशंस में, तब हमको क्लास फाइनल आंसर मिलेगा। तो क्लास में आपको पहले एक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जैसे आपको आप ओनली H निकालने जा रहे हैं, तो ओनली H में आपका NH कितना है? NH इज 25 और T एंड H आपका 11 है, माइनस 11, H और I आपका 9 है एंड 3 का इंटरसेक्शन आपका 3 है, ठीक है? तो 25 इट इज 28 माइनस 20 इट इज 8, ये आपका ओनली H आ गया। अब क्वेश्चन आता है फाइंड हाउ मेनी यू रीड एग्जैक्टली H पेपर, एग्जैक्टली H का ही आ जाएगा 8, ठीक? नेक्स्ट अब आपने कहा लिया सही, ओनली T आप फाइंड करें, ओनली T का एक्सप्रेशन फॉर्म पे नहीं तो तीनों को ऐड कर लीजिएगा। आपका ये NT है, इसमें H और T आएगा, T और I आई क्लास आएगा, ठीक है? फिर इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? ये क्लास की वैल्यू आ जाएगी, NT is 26 एंड H and T का इंटरसेक्शन 11 है, T और I 8 है और ये 3 है, तो ये आपका हो गया 29 माइनस 90, 29 माइनस 90 दैट इज 10, ये आपका 10 हो गया। नाउ फाइंड N ओनली I, इट इज Ni माइनस H and I, T and I and H intersection T intersection I. Find out I is 26, I 26 है, H और I is 9 minus 9, T और I is minus 8 and plus 3, 29 minus 9 8 17 minus 17, 3 और 9 that is 12, ठीक है? अब क्लास आपको फाइंड करना है ओनली H, ओनली T, ओनली I। इसके बाद मैं इसी में कर देता हूं, आप इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ उसको, ठीक है? देखिए क्लास ओनली H कितना आ रहा है
only h is coming 8 plus यहाँ पर है only h, only t and only I, right? इन तीनों फिगर को आप ऐड करिए 8 plus 10 plus 12, ठीक है? 20 and 8 20 28 class, this is the final answer. Now class one thing more, there is some calculation error. Class इसके वैल्यू 30 आएगी, not 28, right? The final answer is 30, ठीक है? 20 plus 10 30. 28 is not is incorrect. 30 is the right answer.